today's class, we will be covering the fourth unit of your subject, which is insurance services. First of all, in this unit, we'll first understand what is the meaning of insurance. तो इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. इसमें एक पार्टी कौन होती है? वन ऑफ द पार्टी इज इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर पार्टी इज द इंडिविजुअल. ठीक है. जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इट इज कॉल्ड इंश्योरर, एंड जो इंडिविजुअल है जिसको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, इट इज कॉल्ड इंश्योर्ड. ठीक है. In this, insurer promised to indemnify for the financial losses on the occurrence of a particular event due to insured in return for the premium paid at the regular interval. तो इंश्योरेंस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड को कि अगर उसको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कॉम्पेंसेट करेगी. ठीक है. और वो कॉम्पेंसेट क्यों करेगी? क्योंकि इंश्योर्ड क्या करता है? दे आर पेइंग प्रीमियम ऑन द रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, टू बाय दैट इंश्योरेंस. ठीक है. इंश्योर एंड इंश्योरर एंड इंश्योर्ड आर ऑल्सो नोन एज अश्योरर एंड अश्योर्ड. ठीक है. हम इंश्योरर एंड इंश्योर्ड को क्या बोल सकते हैं? अश्योरर एंड अश्योर्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है. Insurance क्या है? It is a risk transfer mechanism in which an individual transfer his or her risk to an insurance company in exchange for a financial protection against unforeseen events. And amount paid for this arrangement is known as premium. ठीक है. तो इंश्योरेंस क्या है? ये एक रिस्क ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है जिसमें लोग क्या करते हैं? बाय पेइंग अ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी, वो एक रिस्क कवरेज बाय करते हैं. ठीक है. कि अगर उनकी लाइफ में कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी उनको कॉम्पेंसेट करेगी. ठीक है. Insurance is the most risk-effective risk management tool, allowing individuals and businesses to be protected from financial risk arising from the variety of contingency. ठीक है. Again, क्या है? It's a risk management tool. ठीक है. जिससे individuals और businesses are protected from the uncertain or unforeseeable circumstances. ठीक है. कुछ भी ऐसा अनअवॉइडेबल चीज अगर फ्यूचर में होती है जिसकी वजह से बिजनेस को या फिर इंडिविजुअल्स को या फिर लोगों को कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लोग इंश्योरेंस बाय करते हैं. एनी डाउट इन द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस? दिव्या, कंटीजेंसी मीनिंग कि आपकी लाइफ में कोई भी अनफोर्सिबल सर्कमस्टांस हुआ, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो हो सकता है बट वो हो गया, अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट हो गया. एनी अदर डाउट एनीवन? सबको इंश्योरेंस की डिफाइन अच्छे से समझ आ गई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, देन विल मूव फॉरवर्ड. किसी को कोई डाउट नहीं है ना? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, देन विल डिस्कस फर्दर. सो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर 7 प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. ठीक है. टू इंश्योर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बोथ इंश्योरर which is an insurance company and an insured, जिसकी जो पॉलिसी होल्डर है, must adhere to 7 इंश्योरेंस प्रिंसिपल. इंश्योरेंस इस 7 प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. इसमें क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? कि बोथ द पार्टीज विल मेक अ फुल डिस्क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है. कुछ भी हिडन फैक्ट होगा
ठीक है, दोनों पार्टी एक दूसरे से एकदम जो ट्रू पिक्चर है उसको डिस्क्लोज करेगी. Both the parties in an insurance contract must act in good faith towards each other. The insured must provide all the relevant information about the subject matter, whereas insurer must provide precise contract details. ठीक है, दोनों पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फुल डिस्क्लोजर करेगी. इंश्योर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू हिज हेल्थ, कुछ भी अगर उसकी कुछ भी उसके पास मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेगी. एंड इंश्योरेंस कंपनी का क्या इसमें रोल है? इंश्योरेंस कंपनी जो वो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रही है उसकी में जो भी उसकी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्लियरली मेंशन करेगी. This principle signifies the full disclosure or maximum truth to each other from each other, to each party from each other. The absence of this principle makes the insurance contract voidable. ठीक है, अगर utmost good faith नहीं होगा, अगर full disclosure नहीं होगा between the parties, तो आपका insurance contract जो होगा वो void हो जाएगा. ठीक है, मतलब उसकी कोई validity नहीं होगी. ठीक है, then comes the next principle, principle of proximate cause. The doctrine of proximate cause is based on the cause and effect principle, which states that once the effect has been proven and the cause has been traced, the nearest and the primary cause of the loss or the proximate cause should be taken into account when determining the loss for a claim for a loss. ठीक है, अप्रोक्सीमेट कॉज का क्या मतलब है कि अगर कुछ इवेंट हुआ है, अनफोर्सिबल इवेंट हुआ है, तो उसका जो रिलेटेड कॉज है उसको कंपनी आइडेंटिफाई करेगी एंड कॉम्पेंसेट करेगी पार्टी को. ठीक है, एनी डाउट इन दीज टू प्रिंसिपल्स? These two principle is clear to everyone? Okay, then we'll move forward to other principles. Then comes the principle of insurable interest. इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि वेन एवर देयर इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा. विदाउट एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब इस केस में क्या है? द इंश्योर्ड पर्सन मस्ट हैव सम इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. कि मतलब अगर उस चीज से, मतलब जिस चीज की भी उसने इंश्योरेंस कराई है, वेदर इट इज अ लाइफ और इट्स प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ठीक है, उस चीज से उस पर्सन को और इंडिविजुअल को कुछ फर्क पड़ता है. ठीक है, उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब उसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ सकता है. ठीक है, द टर्म इंश्योरेबल इंटरेस्ट refers to the subject that if a specific event occurs significantly alters the insured position, but if the specific event does not occur, the insured stays in the same position. Which means कि अगर किसी इवेंट के होने से इंश्योर्ड की लाइफ में कुछ डिफरेंस आता है, then there exists a insurable interest. बट अगर उसके होने से नहीं कोई इम्पैक्ट आ रहा है, उससे भी सिग्निफाई होता है कि हाँ कि there exists a insurable interest. Then comes the principle of subrogation. इसमें क्या है? Following the settlement of the claims for the losses incurred on the insured subject matter, the insurer has the authority to act in the place of the policy holder. सब्रोगेशन का क्या मतलब है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, दे कैन एक्ट इन द शूज ऑफ द इंश्योर्ड. कि अगर इंश्योर्ड ने किसी थर्ड पार्टी से कुछ क्लेम लेना है, ठीक है, तो पहले तो उसको कॉम्पेंसेट कर देगी, सेटलमेंट कर देगी जो भी इंश्योर्ड का क्लेम्स है. ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्टी से उसको जो भी क्लेम्स लेने हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी कैन एक्ट इन द शूज ऑफ द इंश्योर्ड टू गेट दैट क्लेम फ्रॉम द थर्ड पार्टी. Then there is a principle of indemnity. Indemnity का principle क्या है? To compensate for the actual losses incurred by the insured. The insured will only be completely compensated for their actual losses. ठीक है, जो भी उसको एक्चुअल लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को डिटरमाइन करेगी, देन कॉम्पेंसेट फॉर इट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर उसको लॉस
₹1000 का उसको लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी इज पेइंग हिम 1200, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग कि जो उसको एक्चुअल लॉसेस है उसके लिए ही कॉम्पेंसेट करेगी, कोई प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन नहीं होगी इन शॉर्ट के लिए, ठीक है। देन कम्स द indemnification principle goal is to put the insured back in the same financial situation as he was in prior to the loss happening। क्या प्रिंसिपल का मेन गोल है कि बिफोर द अकरेंस ऑफ द इवेंट जो इंश्योर्ड की फाइनेंशियल पोजीशन थी उसी में उसको वापस लेके जाना है, ठीक है। दैट इज द मेन गोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। If a person has an insurance company from the multiple companies, each insurer will share loss according to the quantity of their coverage। अगर किसी इंडिविजुअल ने बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो कैसे कॉम्पेंसेट करेगी उसके लॉसेस के लिए? बाय कंट्रीब्यूटिंग अकॉर्डिंग टू देयर कवरेज अमाउंट, ठीक है। Then comes the principle of loss minimization। The insurer is obligated as an owner to take the necessary step to minimize the losses to the insured party। The principle forbids the owner from being irresponsible and negligent simply because the subject matter is insured। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन क्या बोलता है कि अगर मैंने किसी चीज का, जैसे मैंने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज मेरे पास उसका इंश्योरेंस है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करूंगी, ठीक है। आई विल ट्राई कि मेरे लॉसेस मिनिमाइज हो जाएं, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। Any doubt, anyone? Divya, do you want me to repeat principle of subrogation? Okay, I'll repeat both of it. And Mayank, you are asking, is insurable interest calculated in monetary terms? No, it's not calculated in monetary terms. But and will there be the class for compensation for the first class? Mayank, I didn't get your second question. First, I explain both the principle again, then you can ask your question again. देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी चीज की, इफ आई एम ए पॉलिसी होल्डर, ठीक है, और अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करा रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई डैमेज होता है, ठीक है, तो उससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बिकॉज कि अगर उस चीज को कुछ भी इफेक्ट होता है, कुछ भी नुकसान होता है, उससे मेरे को अफेक्ट होगा, दैट इज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योर्ड पर्सन मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज क्लियर टू एवरीवन? Is principle of insurable interest clear to everyone? Okay, then we'll discuss the principle of subrogation। subrogation का क्या मतलब है कि अगर फॉलोइंग द सेटलमेंट, जब जैसे मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से किसी डैमेज के लिए क्लेम किया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने, और वो जो डैमेज हुआ है इट इज ड्यू टू सम थर्ड पार्टी, किसी तीसरे बंदे की वजह से मुझे वो नुकसान हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है पहले तो वो मेरे क्लेम्स को सेटल करेगी, दिल पे मी, ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्टी से उसको रिकवरी करनी है वो काम वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इंश्योरेंस कंपनी विल एक्ट इन द शूज ऑफ द इंश्योर्ड टू गेट द रिकवरी फ्रॉम द थर्ड पार्टी। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज क्लियर टू एवरीवन? Okay, now may I ask you a question? What were you asking?
देखो लास्ट क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, पर नेक्स्ट वीक में तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी बाय स्केड्यूल दिस शुड बी योर लास्ट क्लास, ठीक है। अब तुम्हारी नेक्स्ट वीक में भी एक और क्लास होगी, दैट विल बी योर कॉम्पेंसेटरी क्लास फॉर द क्लास यू हैव वी हैव मिस्ड। Obviously, third, if he doesn't has the insurance, obviously third party has to pay it himself. Neha, which principle you want me to explain again? देखो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, ठीक है, एंड एक इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने उससे इंश्योरेंस लिया, ठीक है। पहले क्या करेगी, अगर मेरे को कोई भी डैमेज हुआ है, ठीक है, जिसके लिए मैंने इंश्योरेंस क्लेम करा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी मेरे क्लेम सेटलमेंट करेगी, ठीक है। बट वो जो डैमेज है मुझे ड्यू टू सम थर्ड पार्टी हुआ है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे क्लेम तो उसने सेटल कर दिए, बट दे विल एक्ट इन माय शूज, कि मतलब वो एज अ इंश्योर्ड एक्ट करके थर्ड पार्टी से वो जो अमाउंट है रिकवर करेगी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। Neha, now is it clear to you? Okay, then we'll move forward. देन कम्स द लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने व्हाट इज एन इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस क्या होता है वो डिस्कस किया है, एंड इंश्योरेंस के 7 प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो हमने डिस्कस किए। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी, या फिर डिफरेंट टाइप्स या फिर कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर guarantees to pay a specific amount of money to the beneficiary, which could be a nominee, in exchange of a premium upon the death of an insured person or at the end of the maturity period. इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योर्ड को प्रॉमिस करती है, अगर इन केस ऑफ हिज डेथ वो क्या करेगी, दे विल पे सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू हिज बेनिफिशरीज, ठीक है। या फिर दिस कुड बी द केस कि उसके डेथ पे कर रही है, और एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी, ठीक है। उस पॉलिसी की जब मेच्योरिटी हो जाएगी उस टाइम पे वो या तो इंश्योर्ड को पे कर देगी या फिर नॉमिनी को पे करेगी, ठीक है। दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस दो टाइप के हो सकते हैं, वन कुड बी द प्योर प्रोटेक्शन प्लान। प्योर प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है, इज दिस जस्ट डिजाइन टू सिक्योर फैमिलीज फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग द लंप सम अमाउंट, ठीक है। इसमें ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस है कि अगर बाय चांस किसी की इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, देन दे विल कॉम्पेंसेट टू देयर फैमिली। देन कम्स द प्रोटेक्शन एंड सेविंग प्लान। A protection and saving plan is a financial tool that helps individuals to plan their long-term goals like purchasing a home, funding their child education and more while offering the benefit of life cover. अब protection and saving में क्या है, इसमें दो चीजों का combination है। One, they are protecting your life, ठीक है। In case अगर कोई unforeseeable event होता है, they will compensate to your beneficiary, ठीक है। Plus they are providing you a benefit of saving, ठीक है। बाय पेइंग देम द प्रीमियम, वो आपका सेविंग भी कर रहे हैं। एनी डाउट इन दिस? एग्जाम्पल क्या है प्रोटेक्शन एंड सेविंग प्लान में, इट कुड बी द मनी बैक पॉलिसीज, रिटायरमेंट प्लान और द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। These are some of the examples of protection and saving plans. Any doubt in these two or the meaning of life insurance? Okay, then we'll move forward. Then comes what are the advantages of obtaining a life
इंश्योरेंस की अगर हम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। फर्स्ट इज अ लाइफ कवर। लाइफ कवर का क्या मतलब है कि अगर बाय चांस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड अ सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। So, when a policy holder passes away, a life insurance policy pays amount, pay out an agreed sum as a death benefit, giving the covered family financial security. Thus, life insurance serve as a safeguard, ensuring that even in the insured absence, the ambition and the aspiration of his and her family are not compromised. ठीक है, तो लाइफ कवर प्रोवाइड करिए इंश्योरेंस पॉलिसी। देन कम्स द पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड कैसे होता है? Life insurance provides an individual with a peace of mind by ensuring that policy holder receives the life coverage and the policy holder loves ones are financially secure. कैसे? Because insurance company are compensating them in the case of a death, ठीक है। तो उसको क्या रहता है, जो insured है they has a peace of mind कि अगर by chance उनकी डेथ हो जाती है so their family won't suffer, ठीक है। देन कम्स द टैक्स बेनिफिट। व्हेन यू मेक अ प्रीमियम पेमेंट फॉर द इंश्योरेंस, योर इंश्योरेंस, यू विल गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। देन कम्स द क्रिटिकल इलनेस कवर। कोई भी आपको क्रिटिकल डिसीज हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, सो इंश्योरेंस कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन कम्स द इनकम बेनिफिट। अगर हम किसी प्रोटेक्शन प्लस सेविंग प्लान में इवेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं सो देयर इज आल्सो अ इनकम बेनिफिट्स, ठीक है। लोन अगेंस्ट अ पॉलिसी, क्योंकि आप इंश्योरेंस पॉलिसी को प्लेज करके लोन ले सकते हो, सो देयर इज आल्सो अ बेनिफिट टू टेक एन एडवांटेज ऑफ इट बाय प्लेजिंग इट टू अ बैंक। एनी डाउट इन द एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? These presentation is from your SLM only. These topics are already there in your self-learning material. So Mayank, we are asking, it says untimely death, but isn't it true that the insurance companies reject claims if the insured dies within a few months of starting of the policy? देखो क्या होता है, हर इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी होती है उसके खुद के क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो अगर उसके क्लॉज में ये मेंशन है कि मतलब 6 मंथ के बाद पॉलिसी इफेक्टिव हो रही है एंड विद इन 6 मंथ इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है बाय चांस, तो फिर कोई क्लेम नहीं होगा। सो इट डिपेंड्स कि what are the policy terms and condition. That's why you were asked to read terms and condition very carefully before buying any insurance policy. Any other doubt in anyone? Okay, moving on. We'll discuss what are the disadvantages of life insurance. क्या क्या disadvantages होती है? अगर जैसे कि अगर आप अर्ली एज पे लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हो तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो लेस होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है देयर आर चांसेस कि आपको कोई ना कोई डिसीज हो सकती है, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन लिeu ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपका प्रीमियम इंक्रीज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लाइफ इंश्योरेंस रिटर्न्स आर कॉम्प्लेक्स, कि जैसे आपने कोई मनी बैक पॉलिसी बाय करी है, ठीक है, तो उसके जो रिटर्न्स हैं यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेटेड, so they are very complex in structure. Then comes the as the there are different life insurance policy available in the market, सबके different characteristics होते हैं, ठीक है। So जिससे जो कस्टमर्स हैं या फिर पॉलिसी होल्डर्स है they get confused कि हमें कौन सी पॉलिसी बाय करनी चाहिए and what will be the policy suitable according to their circumstances, ठीक है। Then comes insurance firm may not pay benefit even after the policy matures. They have resisted paying the sum promised on the debt to the policy holders or the nominee. Therefore, देखो जैसी सेम क्वेश्चन मयंक ने पूछा था कि इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी क्लेम नहीं देती है, क्यों नहीं देती है? बिकॉज
कुछ भी वो बाद में जाके बोल सकते हैं कि देयर इज सम क्लॉज इन योर पॉलिसी कि हम इस बेसिस पे डेथ हुई है, हम इस केस में नहीं पे करेंगे, ठीक है। सो इस चीज से अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए हमें क्या करना है, बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट हम सारे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे एंड प्रॉपरली रीड आउट करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर दे सेइंग इन देयर पॉलिसीज। Then any market available financial product has an exclusion and hidden terms. You must find the proper clause and the life insurance policy. Same उससे related point है कि उसमें कोई भी hidden clause हो सकता है कि बाद में इंश्योरेंस कंपनी बोले कि इस रीजन की वजह से डेथ हुई है, देन वी आर नॉट कॉम्पेंसेटिंग यू, ठीक है। तो इन सब को हमें इन सब से हमें बचना है। यू हैव टू रीड आउट योर पॉलिसी वेरी केयरफुली एंड एजेंट्स के साथ भी आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है कि ये चीजें कवर है, ये चीज नहीं कवर है। तो एंड दीज ऑल शुड बी ऑन पेपर, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन का कुछ प्रूफ नहीं होता, ऑन पेपर आपका सब कुछ प्रूफ होना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स कवर्ड इन योर इंश्योरेंस पॉलिसी। Then there are various type of life insurance policy in India. This could be a term insurance policy, whole life insurance plan, unit linked insurance policy, endowment policy, money back policy and retirement plan. ठीक है, इन सबको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टर्म प्लान का क्या मतलब है? टर्म प्लान एज द नेम सजेस्ट इट इज फॉर द स्पेसिफिक टर्म, ठीक है। इसमें लाइफ कवर होता है आपके पास। इट प्रोवाइड्स यू अ रिस्क कवरेज अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इन्वेंचुअलिटी, ठीक है। किस लिए सुटेबल है ये? फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी एट अ रीजनेबल कॉस्ट। देन कम्स द होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। टर्म प्लान में हमने क्या डिस्कस किया? एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए होता है वो, ठीक है। होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है? इट कवर्स योर होल लाइफ टिल द एज ऑफ 100 years, ठीक है। अगेन इट इज प्रोवाइडिंग यू अ लाइफ कवर and also provide the financial security your family to your family. Then comes your unit linked insurance plan. Unit linked insurance plan में क्या है कि first of all it is for the short period 10 to 20 years का ही होता है। इसमें क्या होता है, whatever the premium you are paying to the insurance company, उसमें से वो क्या करती है, पार्ट प्रीमियम तो आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर के लगती है, एंड द पार्ट ऑफ योर प्रीमियम इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट, ठीक है। जिसकी वजह से आपको वो एक सम शॉर्ट बेनिफिट बताती है कि दिस विल बी द अमाउंट यू विल बी गेटिंग। देन कम्स द एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी में अगेन यू हैव द लाइफ इंश्योरेंस, बेनिफिट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस एंड द सेविंग, ठीक है। इसका टेन्योर 5 to 35 years होता है। दे इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियोज which provide you a good return. Then comes the money back policy. मनी बैक पॉलिसी में आपको पीरियोडिक इंटरवल्स पे वो पेमेंट करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड यू अ पीरियोडिक पेमेंट्स एंड अ फुल सम एश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, ठीक है। देन कम्स द रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान में पोस्ट योर रिटायरमेंट दे पे pay you a periodic payments. It help to create a retirement corpus to cover the post retirement cost, ठीक है। Any doubt in these? Accidental policy can be the part of your life insurance policy. Any doubt, anyone? Any doubt, anyone? Or I'll move forward. Yes, LIC had a monopoly in life insurance. Now there are number of private players are also available in the market. So moving forward, now we'll discuss a term insurance.
टर्म इंश्योरेंस अभी हमने डिस्कस करा, इट प्रोवाइड्स अ लाइफ कवरेज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, if the insured dies during that policy term, the death benefit will be paid to the beneficiary or the nominee. ठीक है, इसमें दो टाइप होते हैं, वन इज लेवल प्रीमियम और द लेवल टर्म पॉलिसी. लेवल प्रीमियम का क्या मतलब होता है, इट प्रोवाइड्स अ कवरेज फॉर 10 to 30 years, जिसमें आपका प्रीमियम एंड डेथ बेनिफिट फिक्स रहता है. ठीक है, इट विल नॉट इंक्रीज ओवर द ईयर. ठीक है, देन कम्स योर ईयरली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी. ईयरली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी में क्या है, देयर इज नो सेट ड्यूरेशन एंड इट कैन बी रिन्यूड एनुअली. ठीक है, इसमें क्या होता है, योर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर एज दे ग्रो. देन कम्स योर एंडोमेंट पॉलिसी. एंडोमेंट पॉलिसी का क्या मतलब है, एंडोमेंट पॉलिसी में आपको तीन बेनिफिट मिलते हैं. फर्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट, second is your insurance, and third is your tax saving. ठीक है, the schemes provide you with a guaranteed return and a stable income after the retirement. ठीक है, endowment policy में क्या हो रहा है, as you are making along with the insurance you are making investment also. ठीक है, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट है तो you will get a stable income after your investment. This policy is an all rounder policy because it also provide a life insurance cover. ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज है. फर्स्ट इज फुल एंडोमेंट. फुल एंडोमेंट प्लान क्या होता है, इट्स अ विद दिस प्लान इज आल्सो कॉल्ड अ विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान. अंडर प्लान द कस्टमर विल get a sum assured on the maturity, and if any unusual event occurs during this time the insurance will pay the amount to the nominee. ठीक है, हमने डिस्कस किया ना कि या तो इन्वेस्टमेंट भी है एंड इंश्योरेंस भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये. तो ठीक है, अगर कोई अनयूजुअल इवेंट होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी दे विल कॉम्पेंसेट टू देयर नॉमिनी. ठीक है, या फिर ऑन द मैच्योरिटी जो भी सम एश्योर्ड होगा इन्वेस्टमेंट का उनकी, वो मैच्योरिटी पे इंश्योर्ड को ही पे कर देगी. Then comes your unit linked endowment plan. These are suitable for the people who are risk takers because these are unit linked, they'll invest in the market. ठीक है, fixed term plan premiums are used to buy the investment funds. Market performance determines the fund ROI and it also covers the life insurance. हर endowment plan में life insurance तो होगा ही. Then comes your non-profit endowment. This provides the lump sum at the maturity to you or to your nominee. ठीक है, whichever comes first. Then is the unitized with profit endowment plans. इसमें क्या है, it combines ULIP's earning potential with a guaranteed return to protect your money from the market volatility. इसमें क्या है, they are investing in the market but they are guarantee you a some percentage of return. ठीक है, which is not related to the market volatility. So अगर वो market volatility से related नहीं है तो they are risk free. Then comes the low cost endowment. The insurance guarantee the payment of the sum assured to your nominee in case of emergency, and annual bonuses improve your retirement benefit. ठीक है, then comes your health insurance. अब health insurance किस लिए होती है, it's a contract which allow you to get insurance or a reimbursement for your medical and the surgical expenses. Health insurance is an agreement in which an insurance company agrees to guarantee compensation for the medical expenses if the insured becomes ill or is injured in an accident that requires hospitalization. Health insurance में क्या है कि मैं अपने medical जो expenses हैं उसके लिए insurance buy कर रही हूँ. अब बेनिफिट क्या है, व्हाई शुड आई बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि मेरे जो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे दैट विल बी कवर्ड इन माय इंश्योरेंस. मेरे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी चार्जेस होंगे इट विल बी आल्सो कवर्ड इन इंश्योरेंस, माय इंश्योरेंस पॉलिसी. देन देयर इज इट हैज द ऑप्शन ऑफ द लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी. You can have a cashless treatment if you have a insurance policy, health insurance policy. There is no claim bonus, no room rent capping. You can get a medical checkup, annual medical checkups. You get a tax benefit for this if you pay a premium for the health insurance, and there will be a transportation charges. Any doubt in these? When we are asking, insurance industry has taken over some part of the banking sector, right, ma'am?
I didn't get your question. मतलब now the insurance companies are also tying up with the banking, various banks. Like Bank of Baroda has its own subsidiary in the form of India First Insurance. ठीक है, now the banking industries are also entering into the insurance business. Any other doubt, anyone? And please ask questions only related to this subject. Do you have any doubt related to this topic? Okay, then we'll move forward to our next topic. अब सबसे पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस में ही उसके टाइप्स ऑफ पॉलिसी डिस्कस करते हैं, which could be the different type of policies which are offered by the insurance policy nowadays. So सबसे पहला है फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान. फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान क्या है? It covers your all family members which include you, your spouse, children and parents in a single policy. Then comes the critical illness health plan. Critical illness में क्या है? It provides a financial coverage for the critical illness listed in their which are listed in their policy. Then comes the top up health plan. Top up में क्या है? Like the name suggests, it's a top up. So they are providing you an extra coverage in your existing insurance policy. Then comes the senior citizen health plan, the insurance policy which are available for the senior citizen. Then comes the individual health plan, where it provides a insurance health insurance to a particular individual, and क्या क्या expenses cover होते हैं? Hospitalization for injuries, illness and surgery costs, room rent and daycare. Then comes your personal accident assurance. It covers the medical expenses that occurs due to an accident while providing a coverage for the partial disability, permanent disability and the accidental death. Then comes your next type of insurance. It is a property insurance. Property insurance में क्या कर रहे हैं? I'm getting an insurance for my property. ठीक है, उसको अगर मेरी property को किसी भी चीज से कुछ damage होता है, it could be the damage by fire, theft, wind, smoke, lightning, इससे भी कोई भी damage होता है, then insurance companies are compelled to pay my to compensate for the financial losses that I have incurred. ठीक है, but they don't cover for the damages caused by water owing to the flooding, water seepage, tsunamis and cyclones. ठीक है, ये सब इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कवर करती है. Then in property insurance there are various types. First is an homeowner insurance. Homeowner insurance में क्या है? When you are getting an insurance policy for your own home. ठीक है, हम जब अपने घर के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल, इट इज एन होम ओनर पॉलिसी इंश्योरेंस. रेंटर इंश्योरेंस क्या होता है? रेंटर इंश्योरेंस इज फॉर द टेनेंट्स. जब टेनेंट्स अपने पर्सनल आइटम किसी रेंटेड अपार्टमेंट्स में जो उन्होंने रखे हैं उसके लिए इंश्योरेंस बाय करते हैं, ठीक है, वो है रेंटर इंश्योरेंस. देन कम्स द फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस में क्या है? नेम्स एज द नेम सजेस्ट कि दे आर प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इनएविटेबल फायर्स एंड द रिस्क रिलेटेड टू द फायर्स. Explosion हो गया, implosion हो गया, lightning हो गया, and this could be any damage caused by the fire. Then comes the commercial property insurance. जैसे home owner insurance में क्या था? I am getting an insurance for the residential property. ठीक है, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या है कि मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस बाय कर रही हूँ, विच कुड बी ऑफिसेस, वेयर हाउसेज, रिटेल स्टोर्स, ईटरीज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. ठीक है, फिर होता है नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस. ये सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी है क्योंकि इन नॉर्मल टर्म्स इंश्योरेंस पॉलिसी नेचुरल डिजास्टर को नहीं कवर करती है. इसमें क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेरिल्स सच एज अर्थक्वेक, हरिकेन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स. ठीक है, which has the potential to destroy your property and this which will result in a huge financial losses to the insured. ठीक है, these are some of the type of property insurance.
Any doubt in health and property insurance? Roshan, you are asking if any insured death caused by a natural disaster, then the insurance company liable to pay claims or not. ठीक है, बट देखो अभी मैंने वही बोला कि अगर तुम्हारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में तुम्हारे डेथ बाय नेचुरल डिजास्टर कवर हो रहा है, देन दे आर लाइबल टू पे. ठीक है, बट अगर नहीं कवर हो रहा ना, देन दे आर नॉट कंपेल्ड टू पे फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस कॉस्ट. ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट कि क्या क्या उसके कवरेज हैं, क्या किस किस केस में वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. एनी अदर डाउट एनीवन? सुप्रिया, आई एम एक्सप्लेनिंग इन बोथ द लैंग्वेज. मैं दोनों लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी. कुछ भी समझ नहीं आया? डिड यू गेट एनीथिंग? ओके सुप्रिया, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है यू कैन आस्क मी अगेन, दोबारा पूछ लेना. ठीक है, एंड दीज थिंग हैव टू टेल मी इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, जिससे मैं डुअल लैंग्वेज यूज करके बाइलिंगुअल से ही स्टार्ट करूँ. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेजेस. When you are asking, is the personal accident covered in motor insurance? Is this your question? Then please mail me your question. I'll answer on mail. Then comes the postal life insurance. As the name suggests, postal का मतलब क्या है? It will be provided by the post office. ठीक है, इसमें क्या है? This provides the high return on the premium with the life insurance coverage. Same जैसे हमने डिस्कस किया था, endowment plans होते हैं. ठीक है, कि वो क्या करते हैं? They also invest in the market. ठीक है, so whatever the premium we are paying, उसमें हमें high return provide करते हैं ये, along with the life insurance coverage. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किसने स्टार्ट किया था? दे वर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स एम्प्लॉइज. ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड इन February 1884. Then comes the rural postal life insurance. As the name suggests, again rural का मतलब क्या होगा? It is for the rural sector of the societies. ठीक है, RPLI provides the insurance to all the government personnel, including military, government schools, staff, nationalized bank, or all local civic groups, and private sector employees can also get the benefit of the rural postal life insurance. ठीक है, but this life insurance is mainly focused for the rural areas. ठीक है, अब इसमें हम स्कीम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द स्कीम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट? एक है ग्राम सुरक्षा एंड ग्राम सुविधा. ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट का ग्राम सुरक्षा का? टू प्रोवाइड अ नॉमिनी एज अ सम इक्वल टू द एश्योर्ड सम प्लस अक्रूड बोनसेस इन द इवेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर डिमाइस. अक्रूड बेनिफिट का क्या मतलब है? बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी, तो उसके ऊपर जो भी दे आर गेटिंग अ रिटर्न, वो आपको वो भी कॉम्पेंसेट करेंगे while compensating for your sum assured. Then comes the Gram Suvidha, to pay the nominee a sum equal to the assured sum plus the accrued benefit in the event of the policyholder demise. It's the same in both the cases. Then there comes your eligibility criteria. For the Gram Suraksha, it is from 19 to 55 age, and Gram Suvidha is from 19 to 50 age. Minimum and maximum sum assured is same in both the policies. Then comes the premium payable. Premium vary by the sum assured and the applicant age. It's same in all the insurance policy, because all for the insurance policy, premium is based on your age and the sum assured you are getting. ठीक है. Then there are some other policies like Gram Santosh, Gram Sumangal, and a 10-year RPLI.
Under this, they have defined a different minimum and the maximum criteria. Please go through it for a minute. If you have any doubt, please ask it in chat box. And rural postal life insurance is limited to the rural areas, but the postal life insurance is available for everyone. Sneha, what are you asking? What is the difference between both? I didn't get your question. Please ask it again. Yeah, one is specifically for the rural areas and other is available to all the central governments and the state government employees, all the government employees, basically. Any other doubt, anyone? Because man, they are diversifying from their core activities to reduce their risk or to increase their sources of income. Roshan, you are asking RPLI is only for the government staff. Initially, it was offered for the government staff only. Now it is available for other professionals and the staff working in the educational institution as well. Okay, I'll explain all three again. देखो ग्राम संतोष में क्या है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोवाइड द नॉमिनी असाइनी और हेयर्स विद द सम एश्योर्ड एंड द बोनसेस बिकॉज दीज आर द एंडोमेंट प्लान्स एंडोमेंट प्लान में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोवाइड्स अ लाइफ इंश्योरेंस प्लस दे इन्वेस्ट योर मनी ठीक है सो they are also offering you bonuses when they reach the age of maturity or on the demise of the policy holder. Then comes the gram sumangal में क्या है they are to provide the periodic benefit. They are providing a periodic benefit मतलब वो annual या फिर annual payment करेंगे ठीक है on a specified period they'll make you some payment. Only the sum assured and the bonuses will be paid upon the policy holder death and the scattered
scattered payments will be seized. ठीक है. Then comes the gram priya to provide benefit to the policy holder and his or her nominee upon the expiration of the policy term. The assurance covers the sum assured plus the accrued benefit. ठीक है. So they differs on the payment that will be made on the terms of maturity or either on the death of the policy holder. ठीक है. अब सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फॉर द मिनिमम एज इज 19 एंड टू मैक्सिमम 55 इन ग्राम संतोष. सुमंगल में क्या है? 19 to 45 एंड ग्राम प्रिया में क्या है? इट इज 19 to 45 years. This is the description of these policies. You can go through it yourself. And maximum and minimum amount क्या है? Minimum amount क्या है? ग्राम संतोष में is 10,000. सुमंगल में there is no limit on the minimum amount. ठीक है. ग्राम प्रिया में भी it's also 10,000. But the maximum guaranteed amount in ग्राम संतोष is 1 lakh, 50 lakh in case of the ग्राम सुमंगल and 10 lakh in case of the ग्राम प्रिया. Any doubt in these? No, endowment plans are not the pure investment plans. They are also providing you a life insurance cover. Okay, so it's a combination of both. So we'll move forward. Then comes the pension plan. Pension plan क्या होता है? It also offers you the investment and the insurance cover. पेंशन प्लान में क्या होता है कि यू आर गेटिंग आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ठीक है. सबसे पहले टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान में क्या आता है? हमारा एनपीएस आता है, प्रोविडेंट फंड्स आते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स आते हैं एंड एन्यूटी प्लान आते हैं जिसमें डेफर्ड एन्यूटी होती है और इमीडिएट एन्यूटी होती है. इमीडिएट एन्यूटी होती है कि यू आर पेइंग अ लमसम मनी और उसके बाद आपको पीरियोडिक अमाउंट मिल रहा है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट मिल रहा है एक पीरियोडिक इंटरवल्स. डेफर्ड एन्यूटी होती है कि डेफर्ड एन्यूटी यू विल बी पेड अ सम अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ सम स्पेसिफाइड पीरियड. ठीक है. बेनिफिट क्या है पेंशन प्लान का? कि गारंटीड पेंशन होगी, यू विल गेट अ सम अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर योर रिटायरमेंट. Whenever you invest in a pension plan, you'll get a tax deduction, tax efficiency and liquidity. They are highly liquid. Okay, you can sell it in the market. Then comes the unit linked insurance plan. Unit linked insurance plan क्या होते हैं? They provide you the insurance coverage plus they invest in the market, stock market. इसमें क्या हो सकता है? That could be a equity or the bond market in which they are investing. ठीक है. This product requires regular premium payment from the policy holder. The portion of the premium is pooled with the assets of other policy holder. Then they are invested in the stocks or the bonds or the combination of the two. जैसे कि जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उस प्रीमियम को दे डिवाइड इन 2 parts. फर्स्ट पार्ट इज मेंट फॉर योर इंश्योरेंस कवरेज. ठीक है. और जो सेकंड पार्ट होता है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है. सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड एज वेल. ठीक है. सो यूलिप्स भी डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं. कैसे कैसे कि जिसमें इन्वेस्ट दे कैन डिफर ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट यूनिट इन द प्रोडक्ट दे आर इन्वेस्टिंग. सो दिस कुड बी द इक्विटी फंड जो मार्केट इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे. इट कुड बी द इनकम फिक्स्ड इंटरेस्ट और बॉन्ड फंड्स जो सिर्फ बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे. देन देयर कुड बी द कैश फंड जो तुम्हारे लिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे लाइक एफडीज और द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. और देयर कुड बी द बैलेंस फंड. बैलेंस फंड क्या होते हैं? जो इन कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा पार्ट इक्विटी में किया, थोड़ा सा पार्ट बॉन्ड मार्केट में किया, थोड़ा सा पार्ट लिक्विड एसेट्स में किया. So ULIPs can be categorized on the basis of investment they are doing. Then there could be the another category which could be on the basis of investment objectives. Investment objective क्या हो सकते हैं? First could be to fund your child education or to develop a corpus of fund. Corpus of fund का क्या मतलब है? You want some accumulated amount at the end of some specified period. ठीक है. So this could be the other two objective. Investment objective के basis पे आप invest ULIP buy कर सकते हो. Then comes the category on the basis of no. Sorry, I've repeated this. Any doubt in this?
Mind you are asking, is the old pension scheme likely to be reinstated on central level? I don't think it is possible. Any other doubt, anyone? Khushbu, you have raised hand. Do you have any question? देखो नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान में क्या है, इफ यू आर बाइंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो सिर्फ आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इट इज प्रोवाइडिंग अ कवरेज फॉर योर लाइफ, ठीक है। बट इफ यू आर बाइंग अ यूलिप, यूलिप क्या कर रहा है, दे आर प्रोवाइडिंग अलोंग विद प्रोवाइडिंग यू अ इंश्योरेंस फॉर योर लाइफ, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग द पार्ट ऑफ योर प्रीमियम इन द मार्केट, ठीक है। सो साथ में आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो अलोंग विद द लाइफ इंश्योरेंस। Yes, Mayank, I'll discuss it in the next class. देखो अगर यूलिप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो जैसे टीवी पे जब ऐड आता है ना, दीज आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, सेम आपके यूलिप आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। सो इफ योर इंडिविजुअल इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन द मार्केट ओनली, देन ओनली दे विल बाय अ यूलिप, क्योंकि सबको पता होता है दे आर सब्जेक्ट, इवन दे कैन गेट अ हाई रिटर्न ऑन इट और दे कैन सफर अ लॉस। एनी अदर डाउट, एनीवन? Once you are asking one insured person कितना इंश्योरेंस ले सकता है, इट्स नॉट इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट नहीं होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स कि अलग अलग कॉर्पस का सम एश्योर्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक है। अगर इन्फिनाइट लोगे तो यू हैव टू पे द प्रीमियम अकॉर्डिंगली, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री में तो अवेलेबल नहीं होगी, दे आस्क यू टू पे द प्रीमियम। एनी अदर डाउट, एनीवन? Okay, Sanjay, you are asking me to explain principle of proximate cause again. देखो principle of proximate cause क्या बोलता है कि insurance company, whenever you buy insurance policy, insurance company will try to find out the cause of the cause of your damage, ठीक है। So they will not find out the exact cause, उससे related भी जो भी उसको cause find out होगा, they'll work on it and settle your claims, ठीक है। They will not वो मतलब तुम्हारे जो एक्चुअल कॉज होगा उसके लिए इतना वो नहीं करेंगे, दे विल जस्ट फाइंड आउट द कि क्या रीजन हो सकता है उस डैमेज का, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको कॉम्पेंसेट कर देंगे। दे विल नॉट डू ऑल द इन्वेस्टिगेशन कि किस वजह से ही हुआ होगा। Once there is a difference between the two, इंश्योरेंस में आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहे हो, यू आर बाइंग इट फॉर योर हेल्थ, यू आर बाइंग इट फॉर योर लाइफ, ठीक है। बट यू कैन कंपेयर इट विद द पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल तो इट्स लाइक योर सेविंग सर्विसेज। Yes, all insurance companies are regulated by IRDA. Any other question, anyone? Or should I end this class?